So we will recapitulate what we have done the last class and what we have to do today. Today we have to do, I think, electron capture, because uh, beta decay and positron decay we have already done. And the beta decay, in which you have a nucleus A, Z, and N that decays to a daughter nuclei A. When you have a removal of electron, it means a neutron has been decayed into a proton and a electron. So neutron number has to decrease and proton number has to increase. And electron is removed and you have a antineutrino. And energy which is released in the beta decay, normally beta minus we usually say, that is mass of X minus mass of X dash into C square. ठीक है, यहाँ तक ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है Yes, sir. या नहीं हूँ, मुझे पता नहीं चला. Okay, someone has said yes, sir. And when you have a positron decay, in that case, your new daughter nuclei will have Z minus 1, because one proton has decayed into a neutron, which is very unusual. है ना, बहुत मुश्किल है. Proton lighter mass का होता है neutron के respect में, but proton become a neutron. So this is really something new thing. It is not so usual, and you don't find positron decay very readily available within the nucleus, because you have to create a bigger mass. So there is a positron and plus a neutrino, and Q beta plus, which is energy released during this decay, and that will be mass of X minus mass of X dash minus 2 ME. This is the requirement. क्योंकि जब भी कोई unusual होता है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो this is the extra work you have to, energy which you have to release, or something like this much with the difference in the mass of these two atoms, nuclei mass, or you can say atomic mass. Obviously we have converted into atomic mass, so atomic mass must be differ by this number, then only you will have a positron decay, and that is very rare case. In both the cases, when the energy is released, obviously this energy is shared between two things, that is T, E, that is kinetic energy of electron, and plus the total energy of your this one, neutrino. Neutrino can be this, or it can be antineutrino. If you, this is your minus, this must be plus, and this must be minus. You can write the equation in that form. And TE or E plus maximum will be equal to Q beta or beta plus, whatever you want to say. Similarly, when EV is maximum, then that is also equal to this number. Okay, it can be neutrino or antineutrino. So most of the time it is shared between these two, means electron takes certain amount of energy as a kinetic energy and the neutrino take as a total energy for a certain time. In some cases we have the total energy which is released that goes to the kinetic energy of the electron, and sometime we have the total energy goes to the neutrino or antineutrino. Okay, now we have the another process which is electron capture. Electron capture, effect of electron capture is actually, normally हम E या इस आपको जो बुक में मिलेगा वो सिंबल ये मिलेगा, ब्रैकेट में ऐसा लिखा होगा, that is electron capture. So electron capture is something where electron add up to the nucleus, means electron enters into the nucleus and get captured by the nucleus. It means it has to interact with Z. E minus and Z plus will become a neutron, means what will happen?
Z will decrease and N will increase. It is a similar to this one. The effect is similar to this one. Whatever the daughter nuclei you get, it is same as this one, which you get in the positron decay. And you have an emission of a neutrino. Okay. So this is an electron capture reaction. It is not means this is not usual, but this is very usual. You easily find this kind of reaction in most of the atom. Most of the atom will follow, most of the nuclei will follow this kind of reaction. It will easily capture the electron because the 1s electron is always staying within the nucleus most of the time, and there is a possibility that it can be captured by the nucleus, and the interaction between proton and electron will result into a neutron. And it is very easy because these two will create a heavier mass, so they are meeting and they are creating a heavy. That is obviously a possible thing. And there will be a release of a neutrino. We can also find in the same way as we have done for earlier cases that this is this one. Energy released during this reaction. So that will be initial mass, that is mass of or nuclear mass XA, plus there is an electron. So Me we have to write, but which is added to the nucleus, and minus Mn, which is this one, which is X dash. And we will leave this one because that is roughly it is massless. So this is C square. This is the formula. And if you put the atomic masses, the final formula you will get as this one, which we have already done for the two cases. In the same way, you have to do for this one also. You have to put the atomic masses. So that will be X dash means A. That's all. C square. So it is something like a beta minus decay. That is actual beta particle. When it is decaying, this kind of energy is released. Means the difference between the both daughter and parent nuclei. And since the final product which is being released is only having two things, we only have two things. One is a daughter nuclei and one is a neutrino. So if it is only two things, so it is a two body problem. It means all the things which we have earlier studied about the three body problem, that energy will be shared between these two, and if this one is maximum then this will be least, and if this is maximum then this will be least in the earlier two cases. But here it is only we have two things, and product we have on a two body problem. So energy will be shared between these two, and most of the time, or you can say 99.99% time, what happens that the daughter nuclei is very heavy with respect to neutrino. So the recoil energy is very low. It means all the energy which is released during this reaction, or this you can say decay process or reaction, all the energy goes to the neutrino. It means a mono energetic neutrino is released during electron capture. So if you do a reaction, or if you have a sample and if you try to detect a neutrino, and if you find the neutrino which is coming every time of a same energy, it means the electron capture is going on. And if you find the neutrino which is coming with different energy, it means the beta plus or beta minus decay is going on. So this we can differentiate how electron capture is different from previous two cases. In one case we get antineutrino, in one case we get neutrino. So obviously we have to see how much energy of the neutrino is there, and if the energy is varying, then it must be a positron decay. If energy is not varying, if it is constant every time, then it must be an electron capture reaction. But one twist is there in this equation or this final result. There is a twist. The energy is not equal to this one. Energy is not equal to this one. Energy is equal to something else. And what happens actually when the electron capture happens, the atom which is resulted just after the electron capture, means when the nucleus capture an electron, the atom which is formed is actually this one, X dash. Okay.
But just after the capture, this atom is in excited state. This is not in a ground state. When this capture happens, this atom is in excited state. It means mass of this atom is slightly more when the capture has just happened. जब भी इलेक्ट्रॉन एंटर करता है न्यूक्लियस में, it vanishes, it interact with the proton. At that instant, just after the capture, the mass of the atom is heavier than the ground state of this particular atom. तो एक्साइटेड स्टेट एटम का थोड़ा सा मास ज्यादा होता है और ग्राउंड स्टेट एटम का थोड़ा सा मास कम होता है. ऑब्वियसली देयर विल बी अ रीजन कि अब जब भी आपका एनर्जी डिमांड होगा तो दैट विल कम फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ योर एंड रिजल्ट. तो आपका एटम आपने फॉर्म किया था, उसमें बाइंडिंग एनर्जी है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, एटॉमिक बाइंडिंग एनर्जी है. And if you want to make the atom at a higher energy state, then you have to don't no one is going to give the energy. You have to borrow the energy from the binding energy. Means binding energy will decrease and the mass will increase. So just after the capture, these atoms have heavier mass. Okay, one more thing can happen. अगर 1s ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वैनिश हो जाता है सडनली, मींस इट इज गेटिंग कैप्चर्ड बाय द न्यूक्लियस, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? Will the things remain as it is or something else will happen? After the capture, what could happen? क्या हो सकता है? मतलब कैप्चर हो गया इलेक्ट्रॉन, 1s का इलेक्ट्रॉन, it has been removed. Then what will happen just after this thing happened? उसके बाद क्या हो सकता है? कुछ और प्रोसेस हो सकता है या it will remain कि चलो कैप्चर हो गया, it is done, nothing is to be. Sir, हाँ. will outer electron come into the ground state? Yes, means if your atom is in excited state and any orbit which is closer to the nucleus, means lower orbit, if it is means it doesn't have any or deficient of electron, then what will happen? The higher electrons will try to fill that particular gap. So when they are jumping back to the lower state, means higher orbit electrons will jump to the lower orbit electrons, lower orbit, then there will be a release of photon. So whenever the electron capture happens, there is always a release of X-rays. आपके जब फिलिंग होती है, आपके लोअर में वैकेंसी क्रिएट हो गई है, आपकी डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो हायर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन दे विल जंप टू द लोअर ऑर्बिट and you will have a release of photon. Normally these photons are in X-ray range, means picometer you can say, or fraction of picometer, or say tenths of picometer, 10 to the power of minus 12 के around meters में, that wavelength will be something like that. So these are released after the electron capture. इलेक्ट्रॉन कैप्चर में अब क्या रिलीज हो रहा है? पहले तो आपका न्यूट्रिनो रिलीज होगा, एक मोनो एनर्जेटिक न्यूट्रिनो, दैट विल बी रिलीज देयर, एंड देन यू हैव द this X-rays is also released. तो न्यूट्रिनो तो डिटेक्ट होता नहीं है, न्यूट्रिनो is very hard to detect, so we generally see X-rays is coming out from the nuclei, or you can say atom, actually not from the nuclei. X-rays is coming out from the nuclei. Sorry, not nuclei, sorry, that atom, because electronic transition का X-ray है ये, nuclear X-ray नहीं है. Nuclear X-ray will be different, it will have more energy. So this is a possible reaction, and if you try to see कि something happens like this, कि X-ray emit हो रहे हैं, तो हमारे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चर जैसा इंफॉर्मेशन आ रहा है. अब करेक्शन फैक्टर क्या होगा कि ये एनर्जी जो रिलीज हुई है, we have to put that correction factor, that energy is not this much, it is something else. So that something else is actually, this is the mass difference, it is obvious there, minus m x dash a and c square, but because the mass of the atom just after the capture is heavy, so binding energy is less. How much that binding energy is less? That is Bn, where Bn is the binding energy of nth electron, or you can say nth electron which is captured.
So whatever the electron or whatever the position of that electron in the atom, if that electron is captured, the binding energy of that electron you have to minus from this factor, because this is to be released, but atom is in excited state. So this much of binding energy has to be reduced. So the total energy which can be released during the electron capture, that is minus of this Bn. तो Bn की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत कम है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होता है, और ये वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है. तो दैट इज नॉट affecting much, but not only kilo, it can be tens of kilo sometimes. So for some atom it become 100 kilo, so 0.1 something like that, a fraction of mega electron volt. So sometimes it is comparable and sometimes it is hardly notable. So mostly you get this number. This is very small number, but you can do the fine calculation and you can see what is the actual EV which is coming out. EV will have this value. Okay, so I can show you that how the electron capture is being happening, and then we will see the two important things that is from this electron capture, and then we will do one question, and then we can go for angular momentum and parity selection rule for beta decay, and that will end our beta decay process. So let me just show you the video which is for electron capture. Okay, so this is the situation before the capture. I have not shown the neutrino here, that neutrino is released or not. I have not shown that. I have just showing how the electron is being captured, because obviously we will not show the neutrino because we cannot detect. And if we have the time, I think it is 11. So we will do something about the neutrino. We will study, because there is a unit, there is a topic for neutrino physics. So we will understand what these neutrinos are and why they are so important. And last time I have also I think informed you about that they have been, sometime they have been the candidate for dark matter, but now they are not the candidate for dark matter. So they have lost the interview, they have lost the test, so now they are not the actual candidate for the dark matter. Okay, so we have z number of protons. This is proton and neutrons are there. Red is proton and green is neutrons. And you have 1s orbit. I have only made the 2s and 1s orbit. I have not made any other orbits because that take time to make these animations. So this is 1s orbit, and I have shown that orbit is means its finding of electron in this orbit is even penetrating the nucleus. So this blue color you can see that is penetrating the nucleus. And this one, which is 2s, it can also penetrate, but I have precisely shown that this is only restricted to this particular pink kind of area. So these electrons are restricted to this pink area, and these electrons are can anywhere within this blue part. And what happens, obviously the electrons will move, means they will just, okay, so the electrons are moving, and you can see this electron, which is 1s electron, one of the electron is going within the nucleus also, and then it is coming out. It is doing several times. So कई बार जाता है, कई बार आता है, कई बार जाता है, कई बार आता है. It just going on doing that particular process, and at some instant what will happen, it is being captured. There is no electron, there are only one electron. We have two electrons, one has vanished, it has gone. And now the things become z minus 1. Within the nucleus, one proton has been lost, and that has been converted into a neutron. So now the situation is z minus 1. And at this instant, the atom is in excited state because there is a vacancy. There is a vacancy created within 1s. So lower orbit में हमारे पास electron की filling में deficiency है. We have not filled completely. So what will happen after a certain time, the 2s electron, or you can say 2p electron, that will try to come back from 2p to 1s. Obviously, it will try to fill.
ये भी फिल कर सकता है, 3s वाला फिल कर सकता है, 3p वाला फिल कर सकता है, 3d वाला कर सकता है, 4f वाला कोई भी कर सकता है. Any of the electron at the higher orbit can fill this particular gap. And even the capture can be done not only from 1s, it can be done from 2s, because 2s also have a fine probability to have a penetration within the nuclear dimension. तो 2s के ऑर्बिट भी हमारे कैप्चर हो सकते हैं, 2s ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स. Then what happens? This will come, and when it enters, it will emit an X-ray. So now this is filled. Now this orbit is having two electrons, and this is having only one. And this is the basic ground state, because your Z hasn't decreased. आपका Z decrease हो गया, तो तीन ही इलेक्ट्रॉन से आप काम करना है आपको. Obviously तीन मैंने इसलिए दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादा है, but तीन, it is just symbolically. Then now we are filled, means higher orbit is empty, that is okay. हमारी वैकेंसी ऊपर क्रिएट हो सकती है, and it is acceptable. And now the things become ground state. So till certain time it is in excited state, and the atom was heavy. When the atom was heavy, obviously the binding energy has been lost, and that binding energy has to be subtracted from the mass difference, because that has been gone to make the atom into excited state. And when all the things are happening simultaneously, when the neutrino is being emitted, so neutrino energy will be somewhat less than the mass difference. How much less? It is binding energy of the particular electron which has been captured. Okay, so this is the process of electron capture. If you want to see it again, you can see in throughout one go. Try to focus what is happening. One of the electron is now lost, then the 2s electron is coming to the 1s orbit, and the X-ray is emitted. Okay, and sometimes we have one X-ray, or we can have a multiple X-ray also. That is also a possibility. Okay, so let us back to the our Word file. Okay, so sometime you have one X-ray is being emitted, or multiple X-rays also being emitted. It happens. So the total binding energy, means this Bn. If you talk about this Bn, then Bn will be n times of h nu. H nu is the X-ray, one photon of a X-ray, that is whatever the energy is there. If it is releasing one X-ray, then it is okay. Means you can easily calculate what would be the value of h nu for a X-ray. If I say the frequency lambda is pico, minus 12 meters, then what will be the value of h nu? How much electron volt it will be? Do you know? Red light, या blue light, या violet light, इनकी वैल्यू क्या होती है एनर्जी के फॉर्म में? एच न्यू अगर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? यू हैव ऑलरेडी डन सो मेनी एक्सपेरिमेंट, so you should have the numbers on your finger that this would be the value of h nu. Are about 2 electron volts, I think, for red. Is for red, 1.8 electron volt is from where the red is starting, wavelength red is starting, and 3.2 or 3.3 or 3.4 is around blue. That is obviously a lower wavelength, so energy will be higher. So that is around 3.2 electron volt. Then what is the value of in electron volt? What is the value of this if you have a picometer wavelength? That must be around 10, means 10 times actually. It is not 1 or 2 or 3. It must be more than, or roughly, because it has a range. So 10 electron volt, 13, 14, 15 electron volt. So that is a good amount. And the binding energy, we already know that binding energy आपके जो atoms के होते हैं, हाइड्रोजन का तो आपको याद होगा कि -13.6 से start होता है, फिर 6.4 होता है, फिर 4 point something होता है, and so on. But if you are going with the heavy atoms, they could have the binding energy of certain electron up to around 80 electron volts. That is a huge number. It means, and we have said that binding energy, whatever the binding energy which you have subtracted, that must be equal to the total amount of X-ray which is emitted. So this number, if you talk about, for example, if you have an X-ray of 10 electron volt, then it means 8 X-ray will be released.
if you capture this binding energy electron. तो अगर किसी न्यूक्लियस ने किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया जिसका बाइंडिंग एनर्जी ये है, or it is releasing a X-ray of 10 electron volt, then it has to release 8 X-rays. 8 photon it has to release. Otherwise, if it releases a photon of this much of energy of a single photon, then that is not X-ray. That will become gamma. So if you go on increasing the, means this is reaching towards the mega electron volts, and mega electron volt किसकी energy होती है? Gamma photons की होती है. तो gamma photons नहीं होते emit. Normally X-ray is being emitted. Okay, just hold on. Okay. So and the these are the process हमने discuss कर लिया, equation discuss कर लिया, and what will be released that we have discussed. Now we will discuss two important points, because the electron capture is similar as the positron decay. दोनों reaction में outcome is same. You are starting with the same atom, the outcome is same atom. Means daughter nuclei. If you see this equation, just I will show you both the result of positron and this one. So this outcome is the daughter nuclei have the same picture. This one and this one. Parent is also same. If you start with the particular parent atom, the daughter nuclei are same. So which of these two will be favored? Simple answer that which one will be favored. So the answer would lie in the equation, that this number, which is the difference, means energy which is released during both the process, have two terms common, that is mass of the atom, parent and daughter, and this term is different. 2 times of Me, and this is Bn. Okay, so this Bn is obviously very less than 2 Me. Binding energy of electron is around tens of electron volt, not more than that. Hundreds of electron volt is hardly possible. So this is tens of electron volt, roughly this value, and this value is 1 mega electron volt. So obviously this is very small. 100 times उससे छोटा ही है ना, 10 है, इसको 100 होना है, फिर किलो होगा, तब जाके वो 1 मेगा होगा. So it is 100 times less than that value. So obviously this is favored more with respect to this one. So spontaneously this can happen in any particular nuclei rather than this one. If this one is happening spontaneously, then this could also happen. But if this one is happening spontaneously, this cannot be possible. Do you understand the statement? In any nuclei, if this is happening spontaneously means this equation is there. It is being answered. कि सारे numbers आपके positive answer दे रहा है, तो ये अगर positive है, तो the things are having spontaneous. But whenever this is happening spontaneous in those atoms, this could also happen, because this is also favored. This is also possible. This equation is also possible. But if you have any nucleus, if this is spontaneous, it doesn't say that this will also have spontaneous emission. जिस एटम जिस न्यूक्लियर में ये अगर स्पॉन्टेनियस है, तो इसके लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये इक्वेशन हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए. तो हमें सिर्फ Bn से मतलब है. Bn अगर हमारा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, तो हमारा रिएक्शन हो गया. बट इट डजंट से कि दिस इज आल्सो पॉसिबल, बिकॉज फॉर दिस इट इज रिक्वायर्ड दिस मच ऑफ मास डिफरेंस. तो ये केसेस जितने भी आप देखोगे कि बीटा पॉजिट्रॉन डीके के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता रहता है, बट इलेक्ट्रॉन कैप्चर के साथ
हमेशा पॉजिट्रॉन डिके नहीं होता है, बिकॉज दोनों में आपके पास मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, so it is not always favored. The second thing is that, which I have already said, that the electron capture is outcome is a two-body problem. So your released neutrino will have a unique energy, or sometimes it is called mono-energetic neutrino. So the energy will be fixed. Energy is not going to vary. As you have seen for the beta minus and beta plus, the energy is varying and you have a continuous spectrum. But in this case, you have a peak kind of spectrum. So there will be a certain peak, and that peak will be fixed number. That is something which is, you can say, 1 mega electron volt or 0.7 mega electron, something like that. So that will be a fixed number. That is not going to change. Okay, so now we come to the angular momentum and parity selection rule, and that is, हाँ बोलो, if you have doubt. सर इलेक्ट्रॉन कैप्चर का तो समझ आ गया कि ये हाँ पर बीटा डीके में कंपैरिजन बताया आपने बीएन और 2me का, ये बता दो सर फिर से। देखो ये बीटा डीके क्यों नहीं हो सकता हाँ जब देखो, इलेक्ट्रॉन होगा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू कि हमें ये वैल्यू पहले तो टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास Yes, sir. बहुत सारे एटम है जिसमें पेरेंट और डॉटर के बीच में इतने एनर्जी का डिफरेंस है, मतलब ये मास को एनर्जी के टर्म में इजिली चेंज कर सकते हो। तो दिस मच मास डिफरेंस इज देयर, इट इज feasible, it is possible. We will do one example also. बट जब भी किसी न्यूक्लियर में इलेक्ट्रॉन कैप्चर अगर स्पॉन्टेनियस पॉसिबल है, तो हमें सिर्फ इतने का ही तो डिफरेंस एक्स्ट्रा चाहिए ना। दोनों के बीच में ये नंबर डिफर करेंगे, ये नंबर कुछ नॉन जीरो नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा, उसमें से हमें ये माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का डिफरेंस, आता है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेरा एक bn की वैल्यू है माइनस, मींस आई हैव टू पुट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो मेरे पास 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉसिबल है क्योंकि दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अगर ये पॉजिटिव है और दोनों का एंड प्रोडक्ट मेरा पेरेंट से न्यूक्लियर आने में दोनों में सेम है, तो आई कैन से कि व्हाई नॉट बीटा प्लस इज पॉसिबल। एंड प्रोडक्ट तो आपका डॉटर न्यूक्लियर वही बन रहा है जो बीटा प्लस से बन रहा था। आप क्वेश्चन कर सकते हो ना कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर से मेरा एंड प्रोडक्ट वही आ रहा है जो बीटा प्लस से भी आ रहा था, तो बीटा प्लस क्यों नहीं पॉसिबल है? बट बीटा प्लस के लिए this is not sufficient. What is required is this much of, means this mass difference, at least it should be more than, सिर्फ इस mass difference की बात कर रहा हूँ, it should be more than 1.05 और 122 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये नंबर खुद से ही 1.0122, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है मास, एनर्जी के फॉर्म में लिखो तो 0.511, so if you add 0.511 more, so that will be 2201 point. So this is the means इन दोनों के मासेस का डिफरेंस, यानी पेरेंट और डॉटर का डिफरेंस, एटलीस्ट इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस नंबर, विच इज रेयरली वी फाइंड, रेयरली। आप अगर सब्सिक्वेंट उसमें टेबल में जाओगे ना, जो मास के टेबल है, तो दो एटम जो बिल्कुल, अब दोनों एटम कैसे हैं, आपके ए नंबर सेम है, जेड में वेरिएशन हो रहा है या एन में वेरिएशन हो रहा है, ए तो सेम ही है, तो दोनों मास बिल्कुल कंपेरेबल है, इक्वली है। तो यू कैन नॉट फाइंड दिस मच ऑफ बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू मासेस। जब तक ये नंबर इससे बड़ा नहीं होगा, यू विल नेवर गेट अ क्यू बीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। ये जब भी हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं ना, दैट इज अ नॉट एटॉमिक स्केल मासेस, दैट इज अ न्यूक्लियर मासेस यू कैन से। तो जिसमें आपके पास 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के चांसेस हैं मास डिफरेंस के, वो आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके दिखा देगा, बट बीटा पॉजिट्रॉन डीके नहीं कर सकता है। बट कम्स इन द अदर वे, अगर कोई हमारे पास पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियर में मास डिफरेंस इतना फीजिबल है, हमारे पास कोई नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है एटम जिसका पेरेंट और जब वो डिके होगा तो उसका डॉटर, दोनों के मास डिफरेंस में ये नंबर मेरे पास इससे बड़ा आ रहा है, तो दैट कैन हैपन कि भाई पॉजिट्रॉन डिके तो करेगा ही करेगा, बट इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए तो इससे हमें ज्यादा ही चाहिए, ऑब्वियसली ये ज्यादा नंबर है, तो इट विल ऑलवेज डू इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑल्सो। तो जिन एटम्स में पॉजिट्रॉन डिके हो रहा है उनमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर की पॉसिबिलिटी है, बट जिन एटम्स में इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है उसमें बीटा मींस बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन डिके की पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट एवरी टाइम इट इज फिजिबल, द नंबर शुड मैच। मींस यस सर, चलो क्लियर है सर। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव गिवन एग्जांपल
that why the bismuth, this one. I will do the one example, then it will be more clear. We have two atoms, this one, or you can say nuclei. We have bismuth 210 and we have a bismuth 208. ठीक है, दोनों बिस्मत ही हैं बट मास नंबर डिफरेंट है, तो दोनों का मास के टर्म्स में डिफरेंस है, बट जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी है दोनों का सेम है, दोनों बिस्मत ही हैं। इन नेचर दिस फॉलो बीटा डीके, वो स्पॉन्टेनियसली फॉलो करता है, वही बिस्मत है, सेम मास चेंज हो गया है, दिस फॉलो इलेक्ट्रॉन कैप्चर। So question can come कि why there is a difference? One is following a beta decay, which is electron emission, and one is following electron capture. Why this is so? Question can come. दोनों बिस्मत है, एक नजर में देखोगे तो बिस्मत ही है, मास नंबर चेंज हो गया तो क्या होगा, Z और N तो सेम ही है, सॉरी N आपका डिफर होगा, Z विल बी सेम, दोनों में Z का आपका वैल्यू सेम है, बस N का डिफरेंस है, N विल बी समथिंग एल्स, यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे N1 हो गया, यहाँ पे N2 हो गया, यही डिफरेंस है ना, बाकी हैं तो दोनों बिस्मत ही। इंटरनली जो उनके अंदर Z हैं वो तो बिस्मत के ही हैं, जितने बिस्मत में इसमें होंगे उतने उसमें होंगे। तो व्हाई दिस फॉलो, तो हाउ यू विल अप्रोच, यू विल से कि ओके लेट अस कैलकुलेट बिस्मत 210 इफ इट गोज इनटू अ बीटा डीके, ये उसका फेवर कर रहा है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इट विल फॉलो दिस वन, इट विल, देयर इज नो एनर्जी यू हैव टू पुट टू हैव दिस रिएक्शन, इट विल फॉलो ऑन इट्स ओन। सो दिस विल बी बिस्मत 210, मास नंबर में चेंज नहीं आएगा। बिस्मत का मैं Z वैल्यू एक बार बता देता हूँ आपको कि Z वैल्यू क्या होता है। बिस्मत इज 83, so this is initially it is 83, now it will become, अगर बीटा डीके हो रहा तो क्या होगा, बीटा डीके means a neutron has been lost and this will become 84, यही होगा ना अगर बीटा डीके हो रहा है तो, रिएक्शन याद रखना, Z इंक्रीज होता है बीटा, ठीक है। अब आपका रोल क्या है कि दोनों के मासेस जरा कैलकुलेट करें, टेबल में से देख लेते हैं दोनों के मासेस क्या है, ये बिस्मत नहीं होगा, दिस विल बी समथिंग एल्स, 84 क्या है, PO, this is not bismuth, this will be PO, because atom will change, mass will be same but the atom will change. So bismuth 83 का मैं mass आपको बताता हूँ, bismuth 83 210, that is roughly it is 209.984095, and this polonium 84 and having a mass number this, that is 209.9828 and 48. What you have to calculate, you have to just calculate what is the difference between these two and multiply with C square. That number should be positive. Obviously यहाँ पे क्या है 4095 है, यहाँ 2848 है, तो obviously ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो हमारा नंबर पॉजिटिव आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ओके, नेक्स्ट नंबर जो हमारे पास दूसरा है बिस्मत, दैट इज बिस्मत 208 and that will be 83, and neutron number मैं नहीं लिख रहा हूँ, you can subtract these two and you can get the neutron number. If it goes into electron capture, what will happen, Z will decrease, Z has to decrease, so that will become a PB, it will become a lead, and lead 208 is very stable, it is 208 and this will be 82 because Z has to decrease and N will increase. N मैं नहीं लिख रहा हूँ, N आप लिख सकते हो बाद में, दोनों के मासेस आपको मैं बताता हूँ। इसका मास का वैल्यू है 208, बिस्मत इज 207.979717, ठीक है। आप पीबी का देख लेते हैं, पीबी 208 that is 20797 207.97 and 97 and 6627 6627, ठीक है, ये नंबर है। Obviously this number is less than this one, so see this one, कम है ना, है कम ये या नहीं, ये 9717 हो गया, ये 6, this is the extra term which you have, and multiply with C square, this number will be positive.
if this number which you are getting means just minus these two, which is an atomic mass unit, और c square की जगह आप 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल सकते हो, इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब कन्वर्ट करते हो, just calculate that number, and if that number is greater than 1.0122 mega electron volt, then it can follow a positron decay also. So just do the calculation and get me this number, how much this number is. Just difference करो एक बार जरा. bn को हम छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला जो कौन सा कैप्चर कर रहा है उसको हम भूल जाते हैं फॉर टाइम बिंग, दैट इज अ वेरी स्मॉल नंबर. जस्ट डू द कैलकुलेशन हाउ मच मास डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड एनर्जी कितनी है, जो Q होगी यानी Q ये कितना रिलीज होगा. जस्ट डू द डेल्टा m c स्क्वायर, ये कैलकुलेट करो एक बार. देखो ये नंबर क्या है, इसके आसपास आता है. अगर इससे बड़ा आता है देन positron decay is also possible, and नहीं आता है then only electron capture is possible. ठीक है, रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, अगर हमारा नंबर इससे बड़ा है तभी तो positron decay होगा. अगर इससे कम है 2.8 2.8 आ रहा है, 2.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, वेरी लार्ज वैल्यू. पक्का यही आ रहा है, बाकी बच्चे भी कैलकुलेट कर लो एक बार. यहाँ मैंने bn की वैल्यू नहीं ली है, बट bn अगर मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ तो bn में भी अराउंड 100 तो नहीं, 80 या 90 के अराउंड यू कैन अज्यूम कि इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपके पास एक कहीं मुझे वैल्यू अगर मिल जाती है तो मैं किस्मत का है नहीं कि किस पर्टिकुलर रेंज. हाँ कितना है, 2.876 2.8 आ रहा है. yes sir. Okay, if this is coming then it is possible that positron decay could happen, but अभी हमने सिर्फ इतना ही निकाला है, इसमें हमें bn की वैल्यू माइनस करनी होती है कि bn के केस के लिए what is the energy of the 1s orbit. मतलब आपका बिस्मत में आपका 1s ऑर्बिट का एनर्जी कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. जैसे हाइड्रोजन में कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको आप अगर मॉड में ले लो क्योंकि दिस इज द एनर्जी वैल्यू, सो इट कैन टेक एज अ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज अ स्ट्रेंथ. तो बिस्मत का चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम यू कैन डू द कैलकुलेशन, बट मैं चाहूंगा नहीं, मैं चाहूंगा कि पहले मैं एंग्लो मोमेंटम और पैटी सिलेक्शन खत्म करूं. सो व्हाट यू कैन डू कि हाउ मच बिस्मत केस के लिए, यानी उसमें z का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना. हाइड्रोजन एटम का आपने कैलकुलेशन कर रखा है, तो हाइड्रोजन एटम में आप एनर्जी निकालते हो डिफरेंट ऑर्बिट्स की, सेम सेंस में बिस्मत का भी निकालो, बट दैट इज अप्रोक्सीमेशन, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट एनर्जी वैल्यू, बट दैट इज अप्रोक्सीमेशन. बट even though if I consider that it is 50 electron volt, then also this number is good amount. It means positron decay could be possible in this case, but in nature electron capture is more favorable. ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे तो आपने निकाल लिया कि इतना है, लेकिन किसी केस में हो सकता है इन दोनों नंबर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो, it is less than this number, then positron decay is not possible, only electron capture can happen. यानी अब ये स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, जिसमें positron decay पॉसिबल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी पॉसिबल है, बट जिसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर पॉसिबल है उसमें positron decay it is not every time possible. This is what the statement says. और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी अगर इससे ज्यादा आएगी तभी positron decay होगा, इससे कम आती है दोनों के मास डिफरेंस में, then electron capture is possible, not positron decay. ठीक है, so let us quickly go to the सिलेक्शन रूल. बहुत ज्यादा नहीं है वैसे तो, इसमें बहुत लंबा भी है, आपको मैं फॉरबिडन वाला नहीं करवाऊंगा, सिर्फ अलाउड डीके करवाऊंगा. अलाउड डीके भी होते हैं और फॉरबिडन डीके भी होते हैं बीटा डीके में. आपको कहोगे फॉरबिडन डीके तो फॉरबिडन हो गया, तो डीके होता क्यों है. फॉरबिडन डीके इज एक्चुअली अ वर्ड व्हिच इज हैविंग अ मिस मीनिंग काइंड ऑफ थिंग. That is, forbidden is not always forbidden, it is less likely to happen. Forbidden means it is less likely to happen. कई बार होता है ना, आउट ऑफ बाउंड कोई सिस्टम है हमारा, जैसे कहते हैं ना एरिया आप नहीं जा सकते हो अंदर, आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, तो मैक्सिमम टाइम आप वहाँ नहीं जाते हो, लेकिन कभी ना कभी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आता है, नहीं हमें घुसना चाहिए वहाँ पे, जाना चाहिए. इट इज समथिंग लाइक दैट. एनी फॉरबिडन थिंग इज लेस लाइकली टू हैपन. तो
तो हमारे पास बीटा डीके में दो तरीके के डीके होते हैं, वन इज अलाउड डीके एंड वन इज forbidden decay. Forbidden decay is very less likely to happen, but it happens. You can, when you do the measurement, you get that kind of result. But allowed decays are those which is normally favorable. So what happens when you see a beta decay? You have an electron and a neutrino which is being emitted from the parent nuclei. You can say, just let me write in the other form also, x dash, and this is x. So these three things are you are getting. So there is a parent and there is a daughter nuclei, and electron is and a neutron is emitted. They have a spin half. And what we assume that spin outcome after the reaction. First we will let us assume, पहले हम एक assume करते हैं कि हमारे पास angular momentum will be zero. Why we are assuming this condition? ये हम assume करते हैं, but ये हमेशा zero नहीं होता. This can be 1, 2, 3, 4 any number. And that is actually the forbidden decay. तो सारे जो नंबर होते हैं ना कि L की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ये सारे forbidden decay में आते हैं. बट हम इसको भी कंसिडर नहीं करते हैं. वी आर अज्यूमिंग कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो आर जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. कहां पे जनरेट हो रहे हैं? सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस. इफ दे आर जनरेटेड एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, then they don't carry any orbital angular momentum. They have just their spins. तो जब भी वो सेंटर पे जनरेशन होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाउंड्री पे जनरेट हो रहा है या सेंटर पे जनरेट हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया कि आपका जो रिएक्शन होता है ना, यानी विच proton has captured an electron or which neutron has converted into a proton or which proton has converted into a neutron. If this is happening at anywhere in the nucleus, then there will be orbital angular momentum. But if it is happening at the center, then there is no orbital angular momentum. This is what we carry before doing this allowed decay. So if we assume that this is what is happening, everything is at the center of the nucleus, so there is no orbital angular momentum. They only have the spin. If they only have the spin, then there is a two possibility. Either they will come up with this kind of arrangement, or they can come out with this kind of arrangement. तो ये अरेंजमेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहा है और जो आपका न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है एंटी पैरेलल हो सकते हैं, और दोनों पैरेलल हो सकते हैं. दीज आर द टू पॉसिबिलिटी. सो द नेट स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल बी 1 और इट कैन बी 0. तो दो ही पॉसिबिलिटी है, it can be 0 or it can be 1. It means if you talk about the I of x minus I dash of x, यानी sorry I dash नहीं, I of x dash, यानी पेरेंट का टोटल स्पिन, जिसको हम टोटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं न्यूक्लियस के केस, और डॉटर का टोटल, इन दोनों का डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू आइदर 1 और मस्ट बी इक्वल टू आइदर 0. दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के पास हाफ हाफ है, तो या तो दोनों पैरेलल होंगे जब वो एमिट हो रहे हैं न्यूक्लियस से, या तो दोनों एंटी पैरेलल होंगे व्हेन दे आर एमिटिंग. सो हाउ देयर अरेंजमेंट इज, दैट विल डिसाइड व्हाट वुड बी द parent and daughter nuclei spin difference या total angular momentum difference. because total angular momentum में आपका spin भी है, orbital भी, orbital को हमने पहले 0 कर दिया, so we are left only with the spin. so it can be 0 or it can be 1. This is one possibility, and these are called allowed decay. तो एक दोनों possibility exist करते हैं नेचर में, इसको कहते हैं Fermi decay और इसको कहते हैं Gamow Taylor decay. सो नेचर में दोनों पॉसिबिलिटी, किसी किसी केस में ये 50% पॉसिबल होता है, ये 50 होता है, किसी केस में 80% होता है, किसी केस में 20% होता है. तो सेम एटम में, मीन सेम कलेक्शन ऑफ एटम, इफ यू हैव अ सैंपल, both the kind of decay can be possible. तो आपके पास दोनों decay possible है. एक में आपका angular momentum total 1 यूनिट का चेंज आएगा, दूसरे में angular momentum 0 यूनिट का चेंज आएगा, बट दोनों पेरेंट और न्यूक्लियस सेम होंगे. That will not be a different thing. They both will be same, but end product will have certain different angular momentum, or sometime it will have a different angular momentum. तो एक बार 0 हो सकता है, एक बार 1 हो सकता है. ज्यादा फेवर ये होता है नेचर में, ये थोड़ा सा कम होता है फेवर. ठीक है, ये तो हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का सिलेक्शन रूल फॉर अलाउड डीकेज, नॉट फॉर द फॉरबिडन डीके. फॉरबिडन डीके में ये नंबर भी आ जाते हैं प्ले करने के लिए, तो हमारे पास और कॉम्प्लिकेशन आ जाता है. एंड if what will happen, if your parity means the electron and the neutrino do not carry, because parity क्या है, parity आपका किस पे डिपेंडेंट होता है, -1 to the power of L.
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे, और ये वैल्यू हमारे केस के लिए क्या है, 0। तो अगर हमने इसको 0 लिया है तो डेल्टा पाई between your parent nuclei and your daughter nuclei means does any parity change will occur when parent is decaying into daughter, so that will be no change. एक तो सिलेक्शन रूल ये है, बाकी दूसरे सिलेक्शन रूल, यानी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये दो वैल्यू हो सकती है 0 and 1, और पैरिटी विल बी हैव नो चेंज। नो चेंज मींस पेरेंट और डॉटर का पैरिटी सेम होगा। अगर प्लस से प्लस में जाएगा डीके होकर के, माइनस से माइनस में जाएगा, या दो ही नंबर पॉसिबल है, प्लस माइनस या माइनस प्लस की पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर द अलाउड डीके, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम यू हैव कंसिडर्ड 0, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम you have considered 0, so there is no parity change between the parent and the daughter nuclei. ठीक है, एग्जांपल्स आर दिस वन। मैं एग्जांपल भी जल्दी से बता दूं बिकॉज हमें अभी ट्यूट क्लास स्टार्ट करना है, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, तो आई एम जस्ट फिनिशिंग इन द वेरी फास्ट मोड। हीलियम 6 that goes into lithium 6, then you have neutron which is going to proton. In both the cases what happens, this is 0 plus goes into 0 plus, this is spin and parity of the parent and daughter, and this is 0 plus, it goes to 1 plus. Angular momentum changes but parity remains same, so that is this case. Angular momentum is same, parity is same, that is this case. And the third one is half plus goes to half plus, that is a mixed case. If you have both the things, that is sometimes which is called a mixed case, when neutron is decaying into a proton. So this kind of changes in all the three cases. You see parity is same, parent daughter, they have plus plus and plus plus. If you have minus minus, then it will have, that is also possible, but you don't have plus is changing into minus. That is possible if you deal with forbidden decay. फॉरबिडन डीके में प्लस माइनस के भी कन्वर्जन पॉसिबल है, पैरिटी चेंज स्टार्ट हो जाता है, बट अलाउड में वी डोंट हैव एनी पैरिटी चेंज। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन द बीटा डीके। फॉरबिडन से आपको ज्यादा मतलब नहीं है, दैट इज इन मोर डिटेल, वी विल नॉट गो इनटू दैट। सो आई जस्ट एंड दिस मीटिंग। अगर डाउट है तो पूछ लो, फिर एंड करके हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्यूटोरियल। एंड ट्यूटोरियल में आज अल्फा डीके पे में क्वेश्चंस करने, और हिंट मैं दूंगा कि क्वेश्चंस करने कैसे हैं, एंड यू कैन परफॉर्म कि भी करो, ट्राई करो, ठीक है। सो लेट अस एंड दिस मीटिंग। इफ यू हैव डाउट जस्ट आस्क मी, अदरवाइज वी कैन एंड दिस मीटिंग। क्या करें, एंड करें? यस, नो? यस सर। तो एंड करके फटाफट कहाँ ज्वाइन करना है आपको? ट्यूटोरियल क्लास में ज्वाइन करना है, एंड वी विल डू अल्फा डीके क्वेश्चंस। जो हमने न्यूमेरिकल अभी अल्फा डीके के नहीं किए हैं अभी तक, तो हम वो करेंगे, जो कि एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। तो जस्ट ज्वाइन द ट्यूटोरियल क्लास। आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।